And I hope you can see what is there in the sheet on the screen. First of all, exercise 7.1 that has been discussed. Question number 1 to 26 are the must-do questions that I will be writing down as MDQ. There was a query about if t is equal to cos x, then dt is why it is not only minus sin x, why dx is there. So I replied that in fact when we take the substitution like t is equal to cos x, we take the derivative with respect to x, that means dt upon dx is equal to minus sin x, and then we take this dx to the right hand side, and wherever there is t, we replace it by cos x, and wherever there is dx, in fact we replace dt by this. लेकिन हम अक्सर बेशतर ये सब्स्टिट्यूशंस वहाँ करते हैं जहाँ हमें डी डिफरेंशियल जो है वो बना बनाया मिल जाए. सो डी टी इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, नॉट ओनली माइनस साइन एक्स बट माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स. अगर मैं डी एक्स नहीं सब्स्टिट्यूट करूँगा तो अगले स्टेप में यानी मुझे एक्चुअली तो डी एक्स को सब्स्टिट्यूट करना है, तो डी एक्स को मैं गायब कर दूंगा तो सब्स्टिट्यूट क्या कर दूंगा. Another inquiry was about the derivative and integrals of the sine inverse or cos inverse or tangent inverse. So I start with this discussion on मेरा ख्याल पड़ता है कि मैंने शुरू में डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास फंक्शन y is equal to sine inverse x है, तो we can write down x is equal to sine of y and then differentiate this with respect to y so that dx by dy is equal to derivative of sine, which is cos y. But cos y from trigonometric formulas is equal to under root 1 minus sine square y, so that dx by dy can be written as under root 1 minus, in place of sine square y we place x square, so that when we take reciprocal dy by dx, it is 1 upon square root of 1 minus sine 1 minus x square. So the derivative of sine inverse is this, and that is one of the reasons that whenever we have, last time we were discussing, whenever we have this kind of irrational function in our discussion of integrals, then we make substitution x is equal to a sine theta. Similarly, if you go for derivative of cos inverse, it will be only different from the previous result in a negative sign. Because when you go through these steps, instead of sine, you will have to take derivative of cosine. That will give you a negative, and negative will appear here. Similarly, tangent inverse derivative is this. If anyone wants me to prove it, I can do that. Whether it is tan inverse or cot inverse, again, the only difference is sine. In the tan inverse, you have 1 upon 1 plus x square. In cot inverse, you have minus 1 upon 1 plus x square with the negative sign. Okay, there are so many responses. I was just looking forward to picking a good question for the future. I'll take care of them later on. हाँ जी. Secant inverse, I have mentioned somewhere in the previous discussion कि इस structure की वजह से derivative of tan inverse और cot inverse में कहीं भी आपके पास irrational functions में a square plus x square आए, a square minus x square आए तो substitution a sin theta, और a square plus x square आए तो substitution x is equal to a tangent theta इस्तेमाल करें. Similarly, secant inverse का derivative ये है, and we get this exactly in the same way. And cosecant inverse derivative differs from the derivative of secant inverse again by a negative sign only. And whenever you have irrational function in which x square minus constant आए, तो वहाँ पे आप x is equal to a secant theta substitution करते हैं. Then about the query of how to integrate sine inverse, तो ये हमने later on करना है, लेकिन चूंकि somebody asked me about this, so I am considering this as an example of by parts.
integration by parts. Although there is only one function sine inverse x, but what we do is we consider 1 into sine inverse x. That means one function is sine inverse, the other function is 1. So f into g की form में इसको ला के, so sine inverse integral 1 dx, which gives you 1 का integral x. Sine का derivative 1 upon square root minus x square minus 1, and integral 1 dx is x. So one term integrated x sine inverse x. The function here x square minus 1 has derivative 2x. अगर मैं यहाँ 2 से multiply कर दूँ तो 2 से divide भी करना पड़ेगा. So I have that pattern in which there is a function whose power is 1 upon 2 and its derivative is multiplied there. So power rule will be used. Minus 1 upon 2 अपनी जगह पे, x square minus 1 की पावर minus half है, तो पावर रूल कहता है कि 1 ऐड कर दो और जो रिजल्ट नया नंबर आया उससे डिवाइड कर दो. And hence the integral of sine inverse x is obtained. Now similarly, we can go for integral of cos inverse, integral of tan inverse, integral of secant inverse, blah blah blah. As and when somebody need to know how to get the integral of secant inverse, तो हमारे questions के अंदर ऐसी सूरत-हाल आती रहेगी और there I'll describe. Before you go to exercise 7.2, although I have discussed most of article 7.2, only one thing is remaining. Question numbers 1 to 38 are mostly of the type 1 and type 2, direct integration by part, or repeated integration by part. That means integration by part is applied multiple times. 47 to 52 are the questions about tabular method of integration by part when one of the function is polynomial. And 61 to 66 are definite integrals. That means यही इसी किस्म के सारे integrals हैं, लेकिन उसमें limit दी हुई है, lower limit or upper limit. So I will consider some of the sample questions pretty soon from exercise 7.2 before going to 7.3. The last thing in the article 7.2 is integrals of the powers of sine and cosine. In many situations, we get problems there where we have to solve like sine power 6 or sine power 11, sine power 20, sine power 20,000. Of course, that is crazy, but how we deal with these integrals is the last thing in article 7.2. And here I have discussed how powers of sine, powers of cosine और powers of tangent यहाँ पे नहीं है, अगले आर्टिकल में आता है, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसाइन पावर्स डिस्कस करूँगा. When we have to find this kind of integral, हम पहले फॉर्मूला बनाते हैं और फिर उस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं. So here is the derivation of the formula. This is the result, and then we will apply this result on different cases. Because there are some issues involved in the application as well. So to integrate any power of sine, we first of all name it in. From the power of sine, we separate one power. Just like अगर मेरे पास x power 4 लिखा है, तो मैं इसको x power 3 into x लिख सकता हूँ. ज्यादा साइन पावर nx जो है उसमें से एक पावर साइन के अलग करके एक फंक्शन है साइन पावर n-1 x और एक फंक्शन है साइन x. एंड वी टेक दिस एज अ फर्स्ट फंक्शन जिसका डेरिवेटिव मैं लिख सकता हूँ, इंटीग्रल नहीं लिख सकता. इस फंक्शन का मैं इंटीग्रल लिख सकता हूँ. सो आई टेक दिस एज सेकंड फंक्शन. So first function as it is, integral second function, then the integral derivative of the first function. So sine power n-1 x, the derivative power multiplied n-1, power decreased sine power n-2 x, and derivative of sine, which is cos x.
and then integral of the second function. If you got this trick, then let us proceed further. Sine power n minus 1x into integral of sine, which is minus cos. N minus 1 is constant, take it outside this integral. Sine power n minus 2x cos x, and this integral of sine x appear as minus cos x. Then this term becomes minus cos x sine power n minus 1x. From this, we have a negative sign outside and a negative sign here that makes this term whole positive. Constant n minus 1 is there. Integral sine power n minus 2 here. And this cos and this cos multiplied together becomes cos square. As soon as I see cos square, I recall my elementary trigonometry and I remember that cos square plus sine square is equal to 1, or cos square is equal to 1 minus sine square. So I replace cos square by 1 minus sine square here in this step, so that sine power n minus 2x multiplied by 1 becomes this thing. Sine power n minus 2x multiplied by sine square becomes sine power n minus 2 plus 2. So that sine power n is completed. Now there are two terms in this integral and we separate them. First term with outside constant n minus 1 as power of sine n minus 2. The second term outside constant minus n minus 1. And the integrand is again sine power 1 n with which we started. That is in. So in this process, after application of one step of integration by part, one of the integrals is exactly of the same type that we started with. तो इसकी जगह मैं आई एन लिख दूं और इस टर्म को उठा के इस तरफ ले जाऊं. ये जो आई एन था इसके साथ आई एन, ये टर्म माइनस एन माइनस 1 आई एन है, उधर जाके ये प्लस एन माइनस 1 आई एन हो जाएगी. नो दैट 1 प्लस एन माइनस 1 अगर आई एन कॉमन ले लूं तो 1 1 कैंसिल हो जाता है. एंड ऑन द राइट हैंड साइड ये पहले से मौजूद था, ये इंटीग्रल बचा. लेफ्ट साइड पे n टाइम्स आई एन यानी दिस इंटीग्रल, एंड देन वी डिवाइड थ्रू आउट बाई द coefficient here n constant, and we get this an integral that involves power of n has been converted into one part completely integrated and one part with integral of sine but with smaller power. That makes it possible to name such a formula a reduction formula. So we can have reduction formula for other functions of trigonometric functions with power n. Quick examples. I start with this 3. Sine power 4. You have done such problems in earlier courses. But we use this minus cos x, power of sine is decreased by 1, plus the value of n is here 4, so 3 upon 4 integral sine square x dx. Yesterday we discussed that जब हमारे पास sin square या cos square रहता है तो sin square को हम replace करते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 से, और कॉस स्क्वायर अगर आ जाए तो हम उसको रिप्लेस करते हैं 1 प्लस कॉस 2x dx. बट समवन इंसिस्ट के नहीं यार हम तो यही फार्मूला रिडक्शन का इस्तेमाल करते रहेंगे. चलिए साहब, तो अगर रिडक्शन करना है इसका मतलब है 3/4 और इसमें अब n इज इक्वल टू 2 है, तो n इज इक्वल टू 2 इसमें इस्तेमाल करने के लिए माइनस कॉस x sine power 2 minus 1, that means x, plus n is equal to 2, so 2 minus 1, 1 upon 2, integral
2 minus 2, तो sin power 0, sin power 0 का मतलब होगा 1, and that completes the integration. This term is negative 3 by 4 sin x cos x, that you can transform into sin 2x, but we are not doing that, plus 3 by 8 x plus c. Of course, अगर मैं ये इस्तेमाल करता इसके अंदर, तो there would have been more steps involved. So this one discussed. Note that अगर even power, जैसे ये भी है और ये भी है, even power के लिए रिडक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा तो एट द एंड साइन पावर 0 बचेगा, लेकिन अगर ऑड पावर हैंडल करूंगा तो इन द एंड 0 नहीं आएगा बल्कि 1 आएगा. Any problem? So just to demonstrate that odd power क्या होगा, ना मैं 15 कंसीडर कर रहा हूँ ना मैं 5 कंसीडर कर रहा हूँ. I am considering 7. What I am doing, I am considering sine power 7x dx. So with n is equal to 7, using this formula, minus cos x sine 6x plus 6 upon 7 integral sine power 5x, यानी इस स्टेप में एक पावर कम और इस स्टेप में 2 पावर कम. Now we have minus cos x sine power 6x plus 6 by 7, and now in this n is equal to 5. So minus cos x, इस टर्म में साइन की एक पावर कम, प्लस 4 by 5 इंटीग्रल साइन की 2 पावर्स कम. Then we have minus cos x into sine power 6x minus 6 by 7 cos x sine power 4x plus 24 upon 35 integral sine power 3x. And you can go further applying the reduction formula to complete this integration. In the end, जब दो नेक्स्ट स्टेप पे साइन की 2 पावर कम होंगी तो साइन एक्स dx रह जाएगा और उसका रिजल्ट जो है वो माइनस कॉस एक्स होगा. सो आई आस्क यू टू कंप्लीट इट योरसेल्फ. I have done this for sine power nx. I ask you for an exercise, or if I make a second assignment, I will put it for your practice के cos power n के लिए इसी तरह का फॉर्मूला डिराइव कीजिए, और डिराइव करने की जरूरत नहीं है, आपको किताब के अंदर here is the cos formula, and you can easily derive this formula the way I have derived this. No issues. So after that, you go to exercise set 7.2, question number 1 to 38. I hope there will be no problem. Let me consider one of the type of questions in this range. Exercise 7.2. आप लोगों ने किताब डाउनलोड कर ली है? Yes, sir. तो किताब को देख भी रहे हैं?
Okay. Yes, So sir. I want to discuss this integral ln of 3x minus 2. Of course, I should put that in mod, but थोड़ा सा liberal हो गया हम as it is दिख रहे हैं. Now this function, or for that matter, only ln x. ln x किसी function का derivative नहीं है. तो मुझे जिस तरह sin inverse को किया, यहाँ भी करना पड़ेगा. First function ln, second function 1, and go for integration by parts. The first function as it is, integral second function minus derivative of the first function, log का derivative 1 upon 3x minus 2, 1 upon x की तरह, और 3x का derivative 3, integral 1 dx. So what I have now, यहाँ से integral 1 जो है वो x आ गया, x ln 3x minus 2 minus 3 constant बाहर आ गया, लेकिन हम इसको बाहर नहीं ले जा रहे. 3 upon 3x minus 2 dx. And note that denominator of function है 3x minus 2. इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है. लास्ट टाइम वी डिस्कस दिस टेक्निक कि अगर एक फंक्शन डिनोमिनेटर में है और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है, तो रिजल्ट हैज टू बी ln of the denominator function. So using that, we complete the integration, write down the result as this. Minus ln of 3x minus 2 plus c. So there are some problems like this problem involving ये वाला solve किया है. Others you can attempt, and as and when you find anything difficult, you may ask. एक और question मैं इसमें से discuss करना चाह रहा था. This one, x square e power x square, not in this format, but say e power x square into x cube है ना. Now we might think that we are talking about integration by parts directly, but hold on. If I put t is equal to x square, what happens? dt will be 2x dx. So that if I write down e power x square as and x cube as x square into x, rather 2x dx, तो 2 से मैंने जबरदस्ती मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी कर दो. So this part becomes dt, this part becomes e power t, whereas what happens to this part? X square is equal to t. So that gives me an integral of the form e power t into t dt. Integration by parts तो अभी भी लगेगी, but this is much simpler. 1 upon 2 integration by part applied on this, and I consider this function as first function क्योंकि इसका डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा. So integration by part of t into e power t dt, and we have 1 upon 2 t integral e power t minus derivative of t is 1 integral e power t dt what we have as a result, it's not minus 1 upon 2 e power t. Remember, e power t integral is e power t minus 1 into this e power t का integral e power t
and our result is simply 1/2 e power t minus e power t का इंटीग्रल e power t. Serena, I'll do that. Plus c. But remember what was t? X. So we have to go back into the original variable. X square e power x square minus e power x square plus c. So you can go through these exercises. 47 to 52, I told you that यहाँ पे आपने tabular integration करनी है. हमने कहा था कि जहाँ polynomial functions involve हो रहे हैं वहाँ पे आप tabular integration कर सकते हैं. Then from 61, you have powers of sine, powers of cosine. Then you are asked to reduce these formulas for secant power n and tangent power n. This is an additional reduction formula. You attempt them. If you have some difficulty, you can always send me queries on WhatsApp. अच्छा हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्वेरी जब भेजो, जैसे मेरे पास क्वेरीज आई, वो क्वेरीज जो थी वो इंडिविजुअल थी, डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप किया गया था, मैंने उनको डायरेक्टली जवाब दे दिया. लेकिन अगर आप क्वेरी ग्रुप पे भेजेंगे तो आपके और भी साथी हो सकते हैं जिनको वो प्रॉब्लम हो जो आप पूछ रहे हैं. तो मैं ग्रुप पे जवाब दूंगा. कल वैसे मतलब कुछ थोड़ा सा बिजी था, इसलिए और क्लास भी लेके चुका था थोड़ा, तो कुछ लोग आ गए. तो वरना मैं ये करता हूँ कि अगर कोई इंडिविजुअली क्वेरी भेजता है ना, तब भी क्वेरी भी ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ और क्वेरी का जवाब भी ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ. तो आप भी अगर क्वेरी ग्रुप पे भेज दें तो कोई हर्ज नहीं है. अगर आप समझते हैं कि आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही, बड़ी छोटी सी है, आपके साथ ही आपका रिकॉर्ड लगाएंगे यार क्या पूछ रहा है, तुमको रिकॉर्ड लगाने दें यार. और अगर मैं आपका रिकॉर्ड लगाऊं तो मुझे भी रिकॉर्ड लगाने दें, आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा मैं इंशाल्लाह. Okay, so up to 66. These are your target for this exercise. I've told you must do questions for this exercise already. This part is MDQs for exercise 7.3. Okay. अरे exercise 7.1 कहाँ से खोल ली? Go back to my blank pages and I have to now go back to my article 7.3. So is it here? Yes. Article 7.3 is all about various kinds of integration involving trigonometric functions. अभी तक तो हमने चंद particular cases किए हैं, but this article involves all sorts of trigonometric functions, and that is why before starting to consider issues discussed in Article 7.1, 7.3, I have here listed trigonometric formulas that are frequently used in our integration problems that involve trigonometric functions. Method of integration may be different.
This is known as the fundamental identity of trigonometry, which can be put into these two forms. Sine square is equal to 1 minus cos square and cos square is equal to 1 minus sine square, and we use them very frequently. Similarly, we have our trigonometric identity in which 1 plus tan square is equal to secant square. This can be obtained from the fundamental identity if you divide this fundamental identity throughout by sine square. Sine square divide करोगे तो 1 हो जाएगा, cos square upon sine square tan square हो जाएगा, 1 upon sine square. नहीं, ये तो cos square से डिवाइड किया गया है. Sine square upon cos square tan square, cos square upon cos square 1, and 1 upon cos square is secant square. This identity can be put into this form. इसी तरह की एक आइडेंटिटी जो इस्तेमाल करते हैं हम वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बन जाती है, और उसके भी वेरिएंस इस्तेमाल किए गए. लिखा बताए, हाँ ठीक है. तो हम टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर माइनस 1 और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर, और इनकी अल्टरनेट फॉर्म्स फॉर कॉट एंड कोसिकेंट बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं. डबल एंगल फॉर्मूला sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta. Cos 2 theta is cos square theta minus sin square theta is used in three different ways. Cos 2 theta is cos square theta minus sin square theta. अगर sin square को 1 minus sin square से रिप्लेस कर दें या cos square को 1 minus या sin square को 1 minus cos square से रिप्लेस कर दें तो ये आ जाएगा. Cos square को 1 minus sin square से रिप्लेस कर दें तो ये आ जाएगा. And all these forms are very frequently used. और ये तो मैंने अभी पिछले 2 लेक्चर्स में 2 दफ़ा बताया है कि cos sin square जो है जब भी आता है तो उसको हम रिप्लेस करते हैं माइनस cos 2 theta upon 2 से, और cos square जब भी आता है तो 1 plus cos 2 theta upon 2 से. I hope most of you remember the cos alpha plus beta and cos alpha minus beta formulas. Similarly, sin alpha plus beta, sin alpha minus beta, and then from sums to products and products to sum. Of course, this last list of 4 pairs of formulas is not easy to remember, and अक्सर बच्चे पूछते हैं इम्तिहान में, सर वो शीट मिलेगी, फॉर्मूला शीट मिलेगी. I have never been a genius, but I have had advantage of 2 kinds. One, I remain a hard worker throughout my life, and it continues. Second, I had the sense of patterns. मैंने आपसे शायद कहा था कि जो मैथमेटिक्स की जो एक मॉडर्न डेफिनेशन है उनमें से पैटर्न जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे कहीं जरूरत पड़ गई साइन ए माइनस साइन बी, and I don't know how to put it in this product form. A plus B cos में आएगा या साइन में आएगा, मुझे याद नहीं. And let me tell you, मुझे आज तक ये फॉर्मूले याद नहीं. Whenever I need them, a quick reference of list of formula, और अगर लिस्ट ऑफ फॉर्मूला readily अवेलेबल नहीं है या मैं अपनी टेबल में बैठा पढ़ रहा हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ, तो प्रॉब्लम कर रहा हूँ और ये चीज़ मेरे सामने आ गई, अब मुझे सुस्ती हो रही है, यार कौन उठ के जाए किताब उठा के लाए. What I do, let me demonstrate. Would you like this demonstration? अब देखो ना, ये from 38, the attendance right now is 29. इसके 2 मतलब हैं. इसके 2 मतलब ये हैं कि when students know what you're teaching and they're good at it, they may skip. In that case, मैं attendance क्यों लूँ? लेकिन अगर मैं attendance कह दूँ कि भाई मैंडेटरी नहीं है, अच्छा ज़रा बताता हूँ. You are talking about sin A minus sin B को मैं appropriate form of products में कैसे लाऊंगा.
I'll discuss that. तो मैं भी ऐसी नजर पड़ी तो 28 एक तो मैं हूँ, बाकी 27 लोग, तो out of 30 maximum of 37 who attended the class, सब ने अपने अपने ERP नंबर भी भेज दिए. अब मुझे नहीं पता इनमें से कौन लोग मौजूद हैं कौन नहीं. तो I this way I have to, बहुत टाइम ज़ाया हो जाता है अटेंडेंस लेने में, लोगों को फोर्स करने में. नहीं आ रहे ना सही, मैं किसी वक्त भी क्विज ले लूंगा, आओ ना आओ. Okay, right now I am going to give you a quiz. In 5 minutes I am going to give you a quiz. Actually, I was trying to describe it. So what I do is that I consider sine alpha plus beta and sine alpha minus beta. So that I consider this as A, this as B, and there is a negative sign in between. And recall the formulas for sine alpha plus beta. When I say that A is equal to alpha plus beta and B is equal to alpha minus beta, I add them, A plus B, this will become 2 alpha. So that alpha is A plus B by 2. If I subtract them, A minus B, so this minus this alpha will cancel out, or 2 beta by 2. That means beta will be A minus B upon 2. So I start working with sine alpha plus beta minus sine alpha minus beta. And what do I get is sine alpha cos beta, yani sine alpha plus beta ka formula. Cos alpha sine beta minus sine alpha cos beta minus cos alpha sine beta. Now sine alpha cos beta, here it is positive, here it is negative, and it cancel out. And what I'm left with is cos alpha sine beta. And I immediately get this form because alpha is A plus B by 2 and beta is A minus B by 2. So I should have only this. Let me put a red sign. एक ये मुझे याद होना चाहिए, एक मुझे ये पैटर्न याद होना चाहिए, साइन अल्फा प्लस बीटा का और साइन अल्फा माइनस बीटा का. बाकी सारे पैटर्न्स जो हैं इनसे डिराइव हुए. So if you have a sense of how the patterns appear in trigonometric formulas, तो ये दो जो रेड बॉक्सेस मैंने लगा दी हैं, इनकी मदद से हम किसी भी फॉर्मूले को किसी भी वक्त like this you can generate them. Similarly, शायद आपको किसी ने एक ट्रिक बताई हो values of sine, cosine और tangent लिखने की. It top 0, 1, 2, 3, 4, 0 degree, 30 degree, the standard angles, 45 degrees, 60 degrees, 70 degrees. Oh, why 70? 90 degrees. Sine of 0 is 0 upon 4 under the root. Sine of 30 is under the root 1 upon 4. Sine of 45 is under the root 2 upon 4. Sine of 60 is under root 3 upon 4. Sine of 90 is under root 4 upon 4. This is equal to 0. This is equal to 1 by 2. This is equal to 1 upon root 2. This is equal to root 3 by 2. This is equal to 1. How the values of cosine appear? They appear in the reverse direction. 1, root 3 by 2, 1 by root 2, 1 by 2, 0.
How the values of tangent appear? Sine upon cos, 0. This upon this, 1 upon root 3. Sine of 45, this upon this, 1. Tangent of 60, tangent of 45 is 1, and tangent of 60 is root 3 by 2 upon 1 upon 2, so root 3. And 1 upon 0, and it is infinity. And this kind of can be extended. तो इन पैटर्न्स के जरिए हम स्टैंडर्ड एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यूज जो हैं वो रिकॉल कर सकते हैं, हमें किसी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं। जब भी मैथमेटिक्स का टीचर जल भुन के कहते हैं ना कि कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, वो इस वजह से कहता है कि देयर आर सो मेनी फंडामेंटल टेक्निक्स एंड स्टूडेंट्स और टीचर्स ऑफ द एलिमेंट्री क्लासेस नेवर बॉदर टू थिंक अबाउट देम। तो इसलिए वो टीचर के कहता है जी कैलकुलेटर नहीं देगा। अच्छा साहब, coming back to main discussion on the trigonometric functions, integration involved in trigonometric functions. Here again, the basic of the formulas are rewritten. Sine can integral minus cos blah blah. Cosecant into cotangent can integral minus cos. Secant square can integral tangent. Cosecant square can minus cotangent. So this is wrong. This is minus cosecant x. Secant into tangent is secant. Powers of trigonometric function. Now, note that here, when I talk about powers of trigonometric function, मैंने कुछ थोड़ा different किया हुआ है। अगर cos power n है तो उसको multiply किया हुआ है sin के साथ। Did you get? It is different from what we discussed in 7.2. और इसका रिजल्ट जो कैसे लिखा हुआ है? On what basis I have written down the result? We have a function whose power is n, and the derivative of the function is minus sin x. तो यहाँ माइनस की कमी थी, आप माइनस यहाँ भी लगा दें, बाहर भी लगा दें. A function raised to power x multiplied by the derivative of the function, and the power rule is used. So minus cos of n plus 1x upon n plus 1. Sin power nx के साथ अगर cos ना लगा होता तो हम वही टेक्निक इस्तेमाल करते जो हमने 7.2 में की थी, लेकिन अगर साइन के डेरिवेटिव इसके साथ लगा हुआ है तो ये पावर रूल इस्तेमाल होगा. टेंजेंट के पावर n के साथ अगर सेकेंड स्क्वायर लगा हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, तो टेंजेंट का डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड स्क्वायर, तो पावर रूल को सॉल्व होगा. इसी तरह कॉट पावर n के साथ कोसेकेंड स्क्वायर लगा हुआ है तो पावर रूल इस्तेमाल होगा विद नेगेटिव साइन. सेकेंड पावर, कोसेकेंड पावर, सिर्फ कॉस स्क्वायर है तो हम इसको सॉल्व करेंगे, सिर्फ साइन स्क्वायर है तो हम इसको सॉल्व करेंगे. हाँ, रिडक्शन फार्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड द रिडक्शन फार्मूला हियर इज मेंशन्ड अगेन. साइन का फार्मूला डिराइव किया हुआ है, कॉस एन का मैंने यहाँ जिक्र किया हुआ कि आप खुद करें. देन a reduction formula for tangent x obtained in a different way, at this time with a less number of steps. दो पावर्स अलग की, जैसे पहले हमने दो पावर्स अलग की थी, 10 पावर n में से दो पावर अलग की, 10 पावर n माइनस 2, 10 स्क्वायर, और 10 स्क्वायर को सेकेंड स्क्वायर माइनस 1 कर दिया. अब दो इंटीग्रल बन गए, एक 10 पावर n माइनस 2 इंटू सेकेंड स्क्वायर और एक 10 पावर n माइनस 2. हेयर पावर रूल इज यूज्ड क्योंकि टेंजेंट की पावर है और उसके साथ टेंजेंट के डेरिवेटिव, तो पावर इंक्रीज और इंक्रीज पावर से डिवाइड किया. माइनस अगर ये आई है जिसमें पावर n है तो ये उसी तरह का इंटीग्रल है विद टू पावर लेस. तो रिडक्शन फार्मूला फॉर टेंजेंट is obtained. In exactly the same way, the reduction formula for secant can be obtained. I have here given reduction formula, how to derive the reduction formula for secant power n and cosecant power n. Reduction formula you have to prove it yourself. Now, some selected problems from exercise 7.3.
Here we see that we have sine power 3 into cos power 3. So what we do, we write down, rewrite the integrand, साइन या कोसाइन किसी में से एक पावर अलग कर, हमने कॉस में से एक पावर अलग कर ली, बाकी जो बचा वो साइन क्यूब और कॉस स्क्वायर है. कॉस स्क्वायर रिप्लेस बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय साइन क्यूब. तो एक बनेगा साइन क्यूब इंटू कॉस एक्स, एक बनेगा माइनस साइन पावर 5 कॉस एक्स का इंटीग्रल, एंड इट बिकम्स पावर इंटीग्रल. साइन की पावर 3 है और साइन के डेरिवेटिव को साइन मौजूद है, तो साइन पावर 4/4, साइन पावर 5 और साइन के डेरिवेटिव तो साइन पावर इंक्रीज से डिवाइड. Now if I have both powers even, again I try to do the same thing that I did in the previous problem, लेकिन let us see what happens. जब पहले हमने क्या किया था, एक पावर अलग की थी, अब हम क्या कर रहे हैं, दो पावर अलग कर रहे हैं. भाई अगर मैं एक पावर अलग करूं इसमें से तो ये कॉस क्यूब बन जाएगा, और कॉस क्यूब विल नॉट बी इजीली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू साइन स्क्वायर. सो हमने एक पावर अलग करने के बजाय दो पावर अलग की, जैसे कि हमने रिडक्शन फॉर्मूला बनाते वक्त. अब साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिलके बन गया, रिमेंबर द डबल एंगल फॉर्मूला, sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x. तो मेरे पास चूंकि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, तो इसको मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये 2 sin x cos x होल स्क्वायर हो जाएगा, whereas this cos square will be converted to this. Now what is the next step? 2 sin x cos x, क्योंकि होल स्क्वायर में है, that can be written as square of sin 2x, whereas cos square ये वाला is written in this form, 1 plus cos 2x, that is 1/2 plus cos 2x/2, जिसकी वजह से एक इंटीग्रल बन जाएगा what? sin 2x is sin square 2x into 1/2, 1/8 बाहर आ जाएगा. जब 1/8 बाहर आ जाएगा तो अब ये sin square 2x है, इधर से भी 1/8 बाहर आ जाएगा, लेकिन sin square 2x into cos 2x होगा. यहाँ पे मैंने आपको कह दिया कंप्लीट इट योरसेल्फ. जो sin square 2x है, जिस तरह हमने कहा कि cos square x is converted into 1 plus cos 2x/2 and sin square x is converted into 1 minus cos 2x/2. तो हमारे पास sin square 2x है, जब यहाँ 2x है तो यहाँ 4x हो जाएगा. तो दिस विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस एंड कैन बी इंटीग्रेटेड इजीली, जबकि ये sin 2x की पावर 2 है और sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x अवेलेबल है, यहाँ पे पावर रूल लगेगा. कंप्लीट इट योरसेल्फ. Now here is sin 3 theta into cos theta product. ये पावर्स नहीं है, मल्टीपल्स ऑफ थीटा, और ये sin a इंटू cos b वाली फॉर्मेट है, जिसके बारे में अब मैंने आपको ऊपर लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज जो है उसमें बताया था. लास्ट 4 फॉर्मेट, खासतौर पे ये पावर्स प्रोडक्ट्स जो हैं कन्वर्टेड इनटू सम्स और सम्स कन्वर्टेड इनटू. तो ये जो प्रॉब्लम मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो प्रोडक्ट से सम में जाने वाला है. So if I remember, I use it. If I don't remember, I go and get hold of the book of formula, or I sit down and make the formula for sine alpha into cos beta gets converted into
a sum of what functions, जैसे मैंने पहले करके दिखाया. So that product is converted into this sum, alpha plus beta, alpha minus beta, both places sine, क्योंकि sin into cos जो है वो sin alpha plus beta में भी आता है और sin alpha minus beta में भी आता है. So the product is converted into this sum with 1/2 and integration of this sine 5 theta and sine theta is very simple. ये लाइनें जो हैं वो पिछली रिकॉर्डिंग में पता नहीं कैसे पड़ गई थी और मिटी नहीं थी. Anyways, the result is this. Similarly, if we go for problems in which we have powers of tangent and secant together, so we remember that the tangent and the derivative of tangent are related. Tangent की derivative secant square है, लिहाजा इस secant power 4 में से 2 secant square power अलग कर ली, 2 power secant की अलग कर ली. तो अब ये secant square हो गया. एक secant square जो है 1 plus tangent square लिख दिया गया और एक secant square ऐसे है. Now it becomes 2 integrals. 1 tangent power 5 into secant square, एक tangent power 7 into secant square. अब ये पावर इंटीग्रल बन गया क्योंकि एक फंक्शन की पावर है और उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, एक फंक्शन की पावर है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है. तो पावर इंटीग्रल की वजह से टेंजेंट पावर 6 x/6 और टेंजेंट पावर 8 x/8. So here some arbitrary things are written that I was discussing with someone. Question number 36 is in fact discussed here, where tangent square is there and secant cube is there. What we do? मैं secant square अगर अलग भी कर दूं इसमें से, तो एक पावर secant की जो है वो tangent square से रिलेट करना के लिए मुझे अंडर रूट इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो रिकमेंडेड नहीं. तो इसमें से हम क्या करते हैं कि टेंजेंट जो स्क्वायर है इसको 1 प्लस secant स्क्वायर लिखते हैं और secant क्यूब एज इट इज रहने देते हैं, जिसकी वजह से 2 इंटीग्रल बन जाते हैं, secant क्यूब और secant पावर 5. और जो secant का रिडक्शन फार्मूला है वो इस्तेमाल करके इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं. एंड आई हैव रिटन दैट कंप्लीट इक्वेशन. Then powers of secant and powers of tangent independent use of reduction formula for powers of secant and tangent. So I've discussed the proofs of all these formulas. In question number 50, you have got cot power 2 and secant. So how I can handle this problem? I can handle this problem as cos power 2 upon sine power 2 in place of cot square and 1 upon cos in place of secant. So cos की 1 power और cos की 2 powers cancel हुई. क्या बचा? एक पावर cos की और 2 पावर sin की in the denominator. And this becomes the power integral because sin की power है और sin का derivative मौजूद है. So I can write down directly as power increased and increased power divide. इस पूरे प्रोसेस में सब्स्टिट्यूशन भी इस्तेमाल होती है और याद रहे कि जब sin 3 थीटा है तो उसका डेरिवेटिव 3 cos 3 थीटा आएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा. So 1/3 is there. Yeah, it's an interesting problem. मैं इसको अलग से दोबारा सॉल्व करता हूँ. I had some blank pages for today. Are they available yet? The space. Yes, the space is available. So the problem there was, what was the problem number? It was problem number 66 in 7.3.
integral dx upon sin x plus cos. Reasonable? Yes. Now how I handle this? अगर ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाए तो हमारे लिए बहुत सहूलत है. We can easily handle a problem in which there is one single trigonometric function down here. If there is sine x plus cos x, to convert this into a single trigonometric function, I use a trick. The trick is I multiply this with root 2 and divide by root 2. Sin x into 1 upon root 2 plus cos x into 1 upon root 2. If your teacher taught you trigonometry in O level or somewhere else, इस तरह की उसने tricks आपको जरूर कराएं. Now this here becomes 1 upon root 2 is the value of cos 45. The value of root 2 is also equal to the value of sine pi by 4 is also equal to 1 by root 2, sine 45 or cos 45. So this becomes sine x cos pi by 4 plus cos x sine pi by 4. Now that makes it root 2 and a single sine function x plus pi by 4. So sine x plus cos x has been reduced into a single function. Root 2 sine of x plus pi by 4. The integral can now be written as 1 upon root 2. What is 1 upon sine theta? 1 upon sine theta is cosecant theta. So this becomes cosecant of x plus pi by 4. And what's the integral of cosecant theta? We have proved that this is equal to minus of ln what? Cosecant theta plus cotangent theta. That means our result is obtained in the form. Yes. Anyone saying something? This is all marginal work and this is the result. Question number 68, and it is a proof for reduction formula of sine power n. In the limit 0 to pi by 2. I have discussed this in detail. I'll be sharing this sheet with you, and I learn it yourself. If you have any query for steps of proof of this formula, you can always ask. ये दो फॉर्मूले जो हैं इनको वॉलिस फॉर्मूलास कहा जाता है, and in many of the practical problems such integrals appear frequently, and we need such formula. Now another reduction formula, this is the most interesting, when there is a power of sine and a power of cos multiplied together, and it involves the more complicated steps, and you can go for
Yet another reduction technique, but I will not make this reduction technique part of your study as exercise 7.3. Trigonometric integration जो है trigonometric functions की integration, it starts with this reduction formulas for sine and cosine. Then it deals with products of, yes, ये जो लास्ट मैंने आपसे डिस्कस किया, और अच्छा मैंने वहाँ निशान नहीं लगाया, yet another reduction, इसके लिए तो मैंने आपसे कहा कि इसको छोड़ दें, बट ये मैंने आपको यानी रिडक्शन फॉर द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ साइन एंड कोसाइन एज अ फार्मूला मैंने डिराइव करके दिया। यहाँ पे उसने कुछ केसेस डिस्कस किए हैं, और वो केसेस यू कैन इजीली हैंडल, एंड आई हैव हैंडल देम इन सम सेलेक्टेड प्रॉब्लम्स। तो ये वो सब चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस कर ली। इंटीग्रेटिंग पावर्स ऑफ टेंजेंट एंड सीकेंट, ये हमने प्रूफ्स डिस्कस कर लिए, और स्मॉल पावर्स के लिए किस तरह से डील करेंगे, इवन पावर्स के लिए क्या होगा, एंड यू गो थ्रू दीज एग्जांपल्स आल्सो। अल्टरनेट मेथड्स भी मैंने डिस्कस कर लिए पावर इंटीग्रल बना के, एंड दैट्स इट फॉर एक्सरसाइज 7.3, and I'll inform you about the must-do questions tonight. ये वॉलीस कोसाइन फार्मूला जो है, ये मैं इन्होंने साइन फार्मूला और कोसाइन फार्मूला एक्सरसाइज में दिया हुआ, ये मैंने अपने डिस्कशन में शामिल किया। Trigonometric substitution is the next article, and I will stop here today, and then I don't know, there are 28 students now right now. अब अगर मैंने जो 5 मिनट के लिए धमकी दी थी, मैं 5 मिनट में क्विज देने लगा हूँ, वो धमकी तुम लोगों ने उड़ा दी हवा में। आई डोंट नो अशर, तुमने नो सर किसके लिए कहा था? तो वो आपने बोला था कि किसी का सवाल है, किसी का माइक शायद खुल गया था। अच्छा, तो अब ये कि मुझे सच्ची बताओ, हाँ, इकरा डेफिनेटली डे आफ्टर टुमारो इज क्विज ऑन 7.1, और मैं 7.2 भी इंक्लूड कर सकता हूँ, लेकिन फिर टाइम ज़्यादा हो जाता है। आई वांट टू हैव शॉर्ट क्विज almost every class from now onward. I'll be skipping attendance process जो आज 10 मिनट लिया जिसने, और प्रैक्टिकली मैं आपसे सब्जेक्ट डिस्कशन जो है वो लेस देन 75 मिनट्स की। So I will be skipping attendance, and instead I will be taking quiz every class, and I hope quiz pressure will bring people into the class. Attendance अजीब गरीब चीज है. The best experience that I had for attendance was जो आजकल पता नहीं क्या नेशनल यूनिवर्सिटी कहलाती है, पहले फास्ट कहलाता था, वहाँ पे मैं एज विजिटिंग पढ़ा रहा था way back in 90s. There was a class of 65 students, and I had very good experience for that class. स्टूडेंट काउंसलर से मैंने पूछा भाई अटेंडेंस का क्या तरीका है, उन्होंने कहा कि आपकी मर्जी, जिस मर्जी तरीके से लिया पड़े। शायद कि 4-5 क्लासेस गुजर गई, मैंने अटेंडेंस नहीं ली। फिर मैंने CR को बुलाया, मैंने कहा ये बताओ अटेंडेंस का क्या करती हैं टीचर? तो उसने कहा कि सर आपकी क्लास में तो अटेंडेंस की ज़रूरत ही नहीं, सभी आते हैं। मगर अब वो ज़माना नहीं रहा।
और ये जो कम से कम कोर्स है, it is so ill designed, so I should have stopped the recording before giving such comments.